Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day that is relevant for both prelims and mains examination perspective will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 20th of July. The first news is House panel suggests CCTV recording at fair price for the public distribution system, something very important to check the loopholes, the malpractices that is being done there. Second, House panel called for a unified metro rail law, something again important for general studies paper 3 and 2. Third, GST Punjab Goa may see the most stress. Fourth, UK record its highest ever temperature. This is amid the climate change that this is evident across the globe. And the last is an editorial, a new legislation that minor the old, right? So these are some of the important editorial and news of the day. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press the like button. So starting with the first news of the day, that is House panel suggests CCTV recording at the fair price shop. This is important for general studies paper 2 under the topic Parliament and State Legislature, Structure, Function, Conduct of Businesses, Power and Privileges and Issues Rising from it. So Parliamentary Standing Committee, which is also known as PSC, the Parliamentary Standing Committee has suggested the use of CCTV at the fair price shop, which is also known as FPS, to ensure the effective distributions under the PDS, that is the Public Distribution System. And this was brought in to ensure that the National Food Security Act है वो पूरी तरह से इंडिया में implement हो, right? And this will also call for a check of diversion of the rations that is being provided, the food items that is being given for the poor people. तो बहुत important suggestions हैं और बहुत ही लेमन सजेशंस भी हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, राइट? सो इफ यू राइटिंग इन मेंस पेपर एंड गिविंग सम सजेशंस, यू हैव टू डेफिनेटली हाईलाइट दिस पॉइंट. रिमार्क्स क्या क्या दिए हैं पैनल ने और क्या क्या बातों को हाईलाइट की गई है अपने सबमिशंस में, व्हिच वी हैव सबमिटेड टू द लोक सभा. So the report that was recently tabled in the Lok Sabha, the panel has said that it was surprised that despite our joint inspections of the food grain stock in the FCI godown, that is Food Corporation of India godowns, the presence of QCC, right? जो QCC है वो पूरी नहीं की गई. And even the Department for Food Distributions and many beneficiaries has they have complained of getting an inferior quality of food, right? So जो quality control cells है, QCC stand for quality control cells. Now the committee further expressed their concern that only 11 quality control cells have set up in different states, covering minimum of 2 states and UT, which is too less in wake of the implementation of the National Food Security Act. तो जिस तरह से जितनी QCC की ज़रूरत थी, that is quality control cells, उतनी quality control cells नहीं बनाई, जिसकी वजह से और challenges हुए हैं. इवन जो adequate एक लेवल एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए थी वो भी लोगों को नहीं मिली है. सो दिस इज अगेन अ बिग लूप होल दैट स्टिल एग्जिस्ट down the line when the actually policy started in 2030. Now the panel has recommended that setting up more QCC, that is quality control cell, should be expediently done, and to address the issues of quality check control to prevent the loss anything that is arises due to damage of the food grain. So essentially ये एक सबसे important steps होगी जहाँ पे QCC के नंबर्स को बढ़ानी होगी ताकि जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो फूड ग्रेन एक्चुअल में बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो फोर्टिफाइड क्वालिटीज़ की हो या गवर्नमेंट जिस तरह से जो क्वालिटी को इंश्योर कर रही है. Now, government has come up with one nation, one ration card for the migrants also. I think most of you must be aware of this scheme, although this was started by the Atmanirbhar Bharat package. During this Atmanirbhar Bharat package, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंश्योर करने की कोशिश कर रही है दैट जो भी माइग्रेंट्स होंगे उनको बेनिफिशरीज मिलेगी फॉर द PDS फॉर एनी फेयर शॉप अक्रॉस द कंट्रीज, और वो इंट्रा स्टेट पॉपुलेटी भी इंक्लूड की गई है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है फॉर 20 states. Now this is a part of the reform of the PM technology driven system reform. 67 crore beneficiaries in 23 states and 83% of the PDS population
will be covered under the national population by August 2022, right? And all the states to complete the full FPS, that is fair price shop, accommodations, and 100% of national portability to achieve by March 2021. So these are some of the important aspects that government actually started under the Atmanirbhar Bharat package. Now, before I proceed further, something very important that you must know and highlight if you're writing in mains paper is the recommendations which was given by the Santakumar panel, right? So this committee is again something very important. This panel was headed by Himachal Pradesh Chief Minister Santakumar to इम्प्रूव द FCI ऑपरेशंस, उनकी एफिशिएंसी में किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव की जाए और ओवरऑल जो फूड ग्रेन्स की क्वालिटी है उनकी जो खास करके लॉजिस्टिक पार्ट है इवन फॉर कीपिंग द फूड ग्रेन एट राइट प्लेस इज समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो डायरेक्ट ट्रांसफर टू हेल्प टू डीरेगुलेट द फर्टिलाइजर्स, save 30,000 crore in PDS and direct in cash transfer in the cities. अगर बात करें फूड सिक्योरिटी लॉ में तो चेंज फूड सिक्योरिटी लॉ टू रिड्यूस द बेनिफिशरीज फ्रॉम 67% to 40%, रेजिंग द सप्लाई टू 7 kg पर फ्रॉम 5 kg. Now FTI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस टू बिकम an agency for innovations in food management, focus on competitions and the grain supplies. So this was the recommendations, all the recommendation was given very prior. So बहुत काफ़ी पहले ये recommendations आई हैं जिसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की गई थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, राइट. FCI टू विड्रॉ ऑल मेजर स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा एंड फोकस ऑन द ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, राइट. Price support policies to encourage oil seeds and pulses, and a number of recommendations can be implemented by FCI alone. Others department, food public distribution system at the central level, right? So these are some of the important recommendations by the Santa Kumar panel. Now moving to the other news, that is House panel called for unified metro rail law, something important for general studies paper 2, that is parliament and state legislature structure, function, conduct of businesses, power and privileges and issues arising from it. So recently the Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs, they have presented a report. This report titled the implementations of metro rail project in Lok Sabha. So recent में ये प्रोजेक्ट के बारे में बेसिकली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट किया गया है विथ रिगार्ड्स टू द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स. द कमिटी हैज रेज द कंसर्न अबाउट द लो राइडरशिप इन ऑल मेट्रो एक्सपेक्ट दिल्ली एंड मुंबई, जहाँ पे राइडरशिप काफ़ी हाई है. क्यों हाई है? बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. As per the Metro Rail Policy 2070, the state government are required to constitute UMTA as a statutory body to prepare a comprehensive mobility plan for the cities. But actually, this plan was not implemented to the fullest in all the operational metro which is ongoing. Observations by committees की अगर बात करें, the committee was informed that the Union Housing and Urban Affairs Ministry was progressing the draft Metro Rail, that is Construction, Operation and Maintenance Administration Bill, which would replace the 3 existing law जो कि अभी प्रेजेंट में currently operate कर रही है. The report said that there will be 3 acts governing the metro rail network in the country and there is a need for single and comprehensive legislation. तो पैनल ने जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने एक सिंगल और यूनिटरी एक लॉ की बात की है जो कि सिंगली कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होगी पैन इंडिया के लिए. So suppose if you're writing in mains paper, if it is being asked, तो आप इस तरह के जो मेन कोर एसेंस है वो जरूर हाईलाइट करें. Now recommendations by the committee, the panel has recommended use of less capital intensive metro neo or metro light network in the smaller cities with the low ridership. तो जहाँ पे कम राइडर्स हैं, लो पॉपुलेशन, लो राइडरशिप्स हैं, वहाँ पे मेट्रो नियो या मेट्रो लाइट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए जा सकते हैं. Now the committee recommended that Kochi water metro project should be included in the FAME 2 scheme, that would be population free mode of transport. तो FAME 2 के बारे में भी आप थोड़ा चेक कर लें. This is again important for the prelims part. Now the panel has appreciated the launch of indigenously developed internationally accredited One Nation One Card. This is called Common Mobility Card and Automated Fare Collections Gate, जिसको गेट भी कहते हैं, स्वागत के नाम से जाना जाता है. सो दिस इनेबल्स द सीमलेस ट्रैवल बाय मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अक्रॉस द कंट्री. सो दीज आर सम ऑफ द डेवलपमेंटल वर्क विच हैज टेकन प्लेस
by the central government in collaboration with the states. GST Punjab, Goa may see the most stress after the withdrawal of the compensation for the GST. Some of the states will be having a difficult time in terms of the total collections. Important for General Studies Paper 3, that is Indian economy and issues related to planning, mobilization, resource growth and development. So according to the new working paper by the National Institute of Public Finance and Policies, वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स ने एक रिसर्च पेपर जारी किया and they have highlighted that the state like Punjab, Goa and Chhattisgarh are likely to face the most revenue stressed after the end of goods and services tax compensation regime. अगर बात करें टैक्स कंपनसेशन रिजीम की, दिस एक्चुअली स्टार्टेड इन जुलाई 17 और इसकी एंड ईयर है इसी साल 30 जून 2022 को. ये जो पूरी 5 साल की ट्रांजिशन थी जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जो कंपनसेशन होंगे शॉर्टफॉल के वो उनको सेस के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट. सो आफ्टर एन एंड नाउ द स्टेट लाइक पंजाब, गोवा एंड छत्तीसगढ़ वुड बी हैविंग अ ह्यूज लॉस. कुछ स्टेट्स अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि इसकी एक्सटेंशन को और बढ़ाने की ज़रूरत है बिकॉज पेंडेमिक हैज़ impacted the state revenue to such a detrimental that state are still not recovered, right? So with this era, the era of GST compensation that the state government were entitled will come to an end. Now अगर कुछ वर्किंग पेपर की डिटेल्स के बारे में बात करें, what the working paper has actually highlighted in details. So the revenue assessment of the GST in India by the Indian Institute of Public Finance and Policy, the professor have noted that the revenue collection from the GST has fallen short of expectation for both the center and the state. Why? Because 2 years of pandemic has severely and impacted the total collection of the GST, right? And it has also noted that center has made up large revenue by raising the non-shareable taxes and levying the cess on the commodities such as petroleum products. तो गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो चीज़ें हैं जो सेस कलेक्ट की हैं वो सेंटर ने स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया है और इसमें एक ह्यूज अमाउंट सेंटर ने रेज की है जिसको आगे देखना होगा वेदर गवर्नमेंट हैज़ टोटली सेड दैट स्टेट वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, दे वुड नॉट बी गेटिंग अ शेयर. तो यहाँ पे सेंटर ने एक अच्छा अमाउंट जनरेट किया था. नाउ कंपैरिजन ऑफ द ट्रेंड की अगर बात करें, कंपैरेटिवली कंपेयरिंग द रेवेन्यू ट्रेंड प्रायर टू द GST इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम जुलाई 2017 with those since then, it was found that the share of GST revenues falls in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में इसमें गिरावट देखी गई है जो नई टैक्स रिजीम आई थी. while the state like Punjab has recorded the largest increase in the revenue share followed by Maharashtra, and the revenue compensation has assured the state to join the GST framework that has helped them to cope up with the shortfall. Now in absence of the revenue compensation, state may face the revenue shock and it will impact the state finances differently for different state, right? So these are some of the comparison trend that is ongoing with regards to the GST compensations. Now UK records its highest ever temperature. This is something which each and every country should take a caution, although we have been witnessing the climate change, but for a country like UK, they're also now it is evident that these countries are also witnessing some of the detrimental effect of the climate change. So important for General Studies Paper 3, that is conservation, environmental pollutions, degradation and EIA. So Britain has recorded the highest ever temperature at 40 degrees Celsius mark, which was provisionally broken for the first time. This news is also important for the environment paper, जहाँ पे आप इस तरह के एग्जाम्पल को हाईलाइट कर पाएंगे. न्यूज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. Climate expert has described that the temperature record is an harbinger of risking the life and livelihood of the people, और इस तरह के next 30 ईयर में और detrimental effects देखे जा सकते हैं. Extreme heat warning have issued issues जहाँ पे अगर फ्रांस की बात करें, and even for the Netherlands, they have also reported the higher temperature. Now, heat wave in Europe contributed deadly wildfire in France, Greece, Portugal, and Spain. Now, consequences क्या क्या हैं intense heat wave के? So, heat wave fueling the furious wildlife in Europe pushed the temperature Britain over 40 degrees Celsius for the first time, and the high temperature has triggered the unprecedented red alert in England, while some rail lines were closed as a precaution and school were shut in some areas. So you can see 40 is like
समथिंग विच दे हैव नेवर सीन अक्रॉस. और इंडिया में अगर बात करें कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे 50-52 तक चली जाती है. इवन यू सिटी लाइक दिल्ली लाइक 45 इज़ लाइक मिनिमम, 45-42 यहाँ पे होती हैं. कई राजस्थान में ऐसे जगह हैं, कोटा, इवन फॉर जयपुर द टेम्परेचर इज प्रिटी हाई. नाउ एक्सपर्ट ब्लेम दैट climate change for the latest heat wave and the warm has worst in some of the years, right? So देखना होगा आने वाले समय में किस तरह के important strategically हम काम करते हैं climate change को लेकर के, ताकि इस तरह के जो changes हो रहे हैं उसे रोका जा सके. Now body में क्या effect होती है heat wave की? First, dizziness and faint, feels from like not getting drinking water enough, and even heat rate, जो heart rate की अगर बात करें, that also increases and it's gone harder. And heat rashes on the body, lose from heat of the skin. बेसिकली बात करें जो बॉडी में जिस तरह से वाटर की कमी होती है, इनटेक कम होती है, एंड इवेपोरेशन लीड टू द बेसिकली लेस जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बॉडी में वो भी कम करती है. स्किन प्रोड्यूस स्वीट, एंड स्वीटिंग कूल्स द स्किन बाय losing heat through the evaporation. So these are some of the side effect of having if you are witnessing the heat wave. ये कुछ ऐसे evident हैं जो आपको होंगे. Ankle can become swollen and even decrease the blood flow. Now moving to the editorial of the day, that is a new legislation that minor the old, something important for general studies paper 2, that is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from a design and implementations. So under this editorial, I'll be looking into 6 important aspects, that is regulatory theory, good manufacturing practices, the federalism questions, the poor performance by the states, democratizing regulations, and conclusion. And the entire editorial focuses upon the theme of new drugs, medical device, and cosmetic bill. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली पब्लिश किया एक नई ड्राफ्ट बिल को जो रिप्लेस करेगी ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को. तो गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया. कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऑफ लेट गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुई कि चेंजेस करने की ज़रूरत है. जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इस पार्ट को. बट कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो नई बिल पास हुई है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नई चीज़ों पे ध्यान नहीं दी है सरकार ने, राइट. सो द न्यू बिल हैज़ एक्चुअली कम, बट द बिल itself is not that new. This is what the expert and stakeholder has said, right? So there's nothing new in the bill regarding the drugs regulation, and bill does not address the burning issues throwing up with the last decade since the Ranbaxy scandal. Regulatory theory की अगर बात करें, this regulatory act was enacted when Indian pharmaceutical industry was in infancy. Basically जो ये पूरी जब से स्टार्ट की गई है तो उस समय में हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं की थी, अपने स्टार्टिंग स्टेज पे थी. एंड एट द टाइम रेगुलेटरी थ्योरी of this law was based on testing the manufacturing drugs purchased by the drugs inspector in the open market. तो ये कुछ procedures थी जहाँ पे manual inspections की जाती थी. Now if the drugs failed quality testing, the manufacturer could be jailed. तो ये इतने harsh provisions थे उस टाइम पे भी. Now there's no most efficient system to regulations because it is dependent on entirely on the luck or fate. Because अगर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने उस पर्टिकुलर ड्रग को पिक नहीं किया है और वो ड्रग अगर ख़राब है तो वो उसकी फेट है, वो उसको बाद में उसके पिनल प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे. अगर किसी भी ड्रग्स के टेस्टिंग में ये पाया जाता है कि किसी तरह से भी हेरफेर की गई है, देन ही इज़ लाइबल टू गेट जेल एंड इवन द कंपेटेंट अथॉरिटी विल कैंसल द लाइसेंस फॉर द मेडिकल शॉप, राइट. Now, good manufacturing practices की अगर बात करें यहाँ पे, most of the world has shifted for a rigorous system of regulations around the world, और एक good manufacturing practice जिसको GMP भी कहते हैं उसको implement करने की कोशिश की गई है. Now, the drug manufacturing in compliance with the GMP is subject to check, that is unlikely and it would fail quality test once shipped the market, right. तो ये सारे जो pros cons है सारी चीज़ों को check करके finally market में से launch की जाती है. In 1988, India has incorporated GMP and via rules framed by the government rather than the parliament, right? तो government ने इस पे regulation लाई कि इस तरह से चीज़ें follow होंगी, GMP India भी apply करेगी. But even then, the government did not make GMP a central piece of its regulatory strategy. But जिस तरह से final implementation होनी चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा loopholes रहे. Now the federalism question is like one of the issues that has come up in the every review of the regulator system since 1947 has been uneven enforcement of the Drug and Cosmetic Act across the India. So this is the biggest challenge. आप concern के तौर पे भी इसे लिख सकते हैं.
एंड दिस इज बिकॉज द यूएस हैज अ सिंगल फेडरल एजेंसी. अगर आप यूएस के कंपैरिजन में देखें, यूएस में एक सिंगल यूनिफेटरी यूनाइटेड एजेंसीज हैं जो कि ऑपरेट करती है, और इंडिया में हमारे पास 37 एजेंसीज हैं हर स्टेट्स की, यूटीज की भी अलग है कुछ. और इंडिया में जो सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑपरेटिंग विथ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. बट ज़रूरत है कि क्या यहाँ पे इतने बड़े कंट्रीज़ में भी उस तरह की चीज़ों के साथ एक सिंगल यूनिफाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसके साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है जिस तरह से यूएस आगे बढ़ रही है. Now, the drug controller are expected to license the drugs manufacturer and also conduct enforcement actions like sampling, testing, prosecutions, and the standardization of the drugs. Now, CITSCO has a limited role in terms of regulation, import, and deciding whether the new drug have an adequate clinical evidence before they can be sold. तो यहाँ पे भी जो regulations को लेकर के सवाल उठाए गए हैं कि क्या हम और उसे दुरुस्त कर सकते हैं. We should more strengthen the part of the CITSCO and its entire working process. Now, poor performance by the state. Some states have not actually performed well, and even for some states like Himachal Pradesh, जहाँ पे बल्क में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब जिस भी ज़्यादातर आप अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चाहे वो क्रीम हो, टैबलेट्स हो, ड्रग्स हो, ये सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा हैं. And even it has been considered that this state has witnessed a tax holiday and have a poor job in terms of enforcing the drugs and cosmetic act. टैक्स हॉलीडे का क्या मतलब होता है? टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है इट्स अ गवर्नमेंट इंसेंटिव दैट टेम्परली रिड्यूस और एलिमिनेट द टैक्स फ्रॉम द कंज्यूमर और बिजनेसेस, राइट. तो ये डेफिनेशन है टैक्स हॉलीडे की. सिंस इंडिया इज अ सिंगल मार्केट, ड्रग मैन्युफैक्चर इन हिमाचल प्रदेश आर सोल्ड अक्रॉस द कंट्री, एंड इवन रिलेटिवली कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉम्पिटेंट रेगुलेटर्स हैं, लाइक तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में. सो दे हैव डू लिटिल टू स्टॉप द फ्लड इन द सबस्टैंडर्ड ड्रग्स. तो लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह के रेगुलेशंस नहीं होने की वजह से अनफ्लरिश मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. नाउ द मिशेलेकर कमिटी इन 2003 हैज़ रिकमेंडेड सेंट्रलाइज्ड ड्रग लाइसेंस विद द सेंटर रेगुलेटर्स. नाउ द बिल इज साइलेंट ऑन दिस इशू एज वेल, बिकॉज जो नई बिल आई है उन्होंने इस पर भी कोई सेंटर रेगुलेशंस पे बात नहीं की है. सो दिस इज अगेन अ लूप होल एंड चैलेंज. नाउ डेमोक्राइजिंग द रेगुलेशंस बात की गई है, दैट इन अ न्यू रेगुलेशंस दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड, the regulator should require to disclose all the data including the clinical trials, right? And every time the drug is tested in the government laboratories, it should support and be published publicly accessible data में आनी चाहिए. Each inspector of the generalized practice compliance should also include the inspection report that is accessible to the general public, so that no fraud and negotiation is done between the drug inspector and the manufacturers. And there's only way to ensure accountability is to have built up public confidence, and everything should be in a transparent manner. And the new law is silent on the critical issues of transparency. जो नई लॉ है वो ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी बहुत डिटेल में बात नहीं करती है. एंड इवन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट इज ऑन गोइंग सिंस द कॉलोनियल, जो पुरानी लॉज हैं उस टाइम से अभी तक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन एंड द वे फॉरवर्ड? So making information available to the citizen is only the first step in the process. This will call for promoting the transparency in our system of complete evaluations and inspections. Now the next steps to create a legal pathway such as public hearing and citizen, which will allow the enabled citizen to participate in regulatory process and register the objectives. Now the proposed legislation does not include to accommodate द पब्लिक पार्टिसिपेशन. तो पब्लिक पार्टिसिपेशन तभी पॉसिबल है जब सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर्स अथॉरिटीज़ करेंगी, सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट मैनर पर रखेंगी, और जो भी इंस्पेक्शंस होंगी उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डालेंगी. सो दिस इज हाउ थिंग्स कैन मूव फॉरवर्ड. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is C. For second question also the correct option is C. Today's MCQ for practice, आपको बताना है NEU के बारे में. Those entities who are owned and controlled by the Indian citizen as a part of 3-year experience is a part of promoters of NUEs, and no foreign investment is allowed in the NU in existing guidelines. So do check it out for the correct options. Second is electoral bond. All nationalized in India are authorized to issue in cash bond with the valid of 15 days from the date of issuance. These bonds are remittable at the designated account of the registered political parties. So do check it out for the correct options. This question will definitely be helpful for the upcoming prelims examination. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.